Hello everyone, and this video is all about my recent interview experience at Infert. This is basically a company located at Bangalore, 7 years old. So I applied on an opening there, and for the sake of Python developer was the position. The company reached out to me, and this is all about whatever I've written on the board. Round one and round two were looking like. So basically, see, इसमें मुझसे ज़्यादा कुछ पूछा क्या गया था. So since Python developer, first round was mostly all about your basics of Python. कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस हुआ था. म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, जनरेटर फंक्शंस, डेकोरेटर्स एंड बेसिक डीएसए प्रॉब्लम्स. बिग ओ ऑफ इनमें सॉल्व करने वाले हैश मैप वाले प्रॉब्लम्स एज वेल एज few more stuff whatever in terms of basic DSA do they ask, right? And afterwards अगर round 2 की बात करें तो उसमें भी same mutable immutable data types पूछा गया था. A little bit of API design kind of stuff they asked, as well as after that some recursive problems. Too much nesting of list, if it is there, how would you just figure out how many zeros and ones are the contents present in terms of the list? So उसमें अगर आप recursive problem, the overall problem, if you try to solve it with the help of recursion, that can be done. थोड़े बहुत SQL पूछे गए round 2 में. In both the rounds, overall, the feedback came out to be positive by the recruiter. And round 1 and 2 both अच्छा भी हुआ था. And the main important topics that I will be asking for is list comprehension, generator functions, decorators. इन चीज़ों को आप Python में जितने भी लोग Python developer के interviews देते हो, more or less किसी भी startup में हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. इसको आप जस्ट अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है. एंड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करके जाना. अगर आपको पाइथन का कोड लिखने को ही दे तो किस बारे में देगा. सो मोर और लेस दे वुड बी गिविंग यू सम प्रॉब्लम्स एंड you would be asked to just write the list comprehension code corresponding to that. ये कुछ ज्यादा ही कॉमन स्मॉल कोड बेस्ड एग्जांपल पूछा जाता है. नॉट ओनली इनफर्ड में मुझसे पूछा गया, प्रीवियस भी कुछ स्टार्टअप्स थे उनमें भी पूछा गया था, वॉलमार्ट में क्वाइट हेवीली फर्स्ट राउंड में पूछा गया था, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप पाइथन डेवलपर या फिर डेटा साइंस बेस्ड एसडी रोल्स में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे सीक्वल भी आपसे पूछा जा सकता है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर जितने नॉर्मल सीक्वल बेस्ड एक एसडी को आना चाहिए. Average, sum, whatever kind of functions you are basically taking care of in terms of SQL. सारे चीज को अच्छे से आप देख के जाओ. मोर और लेस जॉइंट्स, whatever are the SQL joins, right? Basic in terms of, please be thorough with them all. अगर सपोज आप पोस्टग्रेस में काम करते हो या फिर माई सीक्वल में काम करते हो, बेस्ड ऑन दैट व्हाट फंक्शनैलिटीज डू दे सपोर्ट. So please have a look onto them before going to the interviews, because they are quite a bit helpful. अगर आपसे पूछा गया, so you will be able to answer all of them, right? So yes, after round 1 and round 2, they moved me to the hiring manager. And post hiring manager, basically while the hiring manager, multi-threading concurrency, after that Python, whatever applications are there, if they are working with the unicorn workers. So these kind of topics were being introduced. एंड कुछ इंफ्रा रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड गोइंग फॉरवर्ड उसमें इतनी जीबी रैम है, इतने ही यूनिकॉर्न वर्कर्स सपोर्ट हो सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट आप ओवरऑल क्या करोगे, राइट? सो मैंने थोड़ा हटके भी वहां पे बात किया दैट व्हाई डोंट वी, इफ सपोज टू मच रिक्वेस्ट आर कमिंग, व्हाई कांट वी प्लेस अ मिडलवेयर in terms of Kafka and handle the concurrency. कुछ दो तीन आप इंस्टेंसेस चला दो एंड उसको आप लोड बैलेंसर से आप ओवरऑल रिक्वेस्ट को हैंडलिंग कर दो. सो आई थिंक द केस कैन बी क्वाइट हैंडल्ड. But more specifically, they asked me what you are going to do with unicorn workers. These were the specific questions basically they asked. Also, they asked me questions related to that of multi-threading as well. Yeah, जो मैंने लिखा है. एंड पास्ट प्रोजेक्ट्स कि आप जब डी शॉ में थे या फिर यूनिट्रॉन में थे, that is get GPT AI, and right now that is being known as Unitron. So आपने क्या क्या काम किया था. So these are the things basically that they were asked. Post hiring manager, they were not well to go ahead with me, and this is what they conveyed. The recruiter conveyed to me. Yeah, and the majority of the reason for rejection जो मुझे लगा after they have given the feedback after the hiring manager round is the salary issue. जो भी expectations मैंने दिया है, they perhaps won't be able to match that. So this is not only the issue with the current startup, with the current Infert company, but have been with that majority of the startups. जितने के भी साथ मैंने recently इंटरव्यू दिया, एक ने डे वन से पहले ज्वाइनिंग के, जिस दिन ज्वाइनिंग होने वाला था, एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप थी, उसने उसके एक दिन पहले जस्ट ऑफर रिवोक की. आफ्टर दैट उनके जो एक्सपेक्टेशंस है क्वाइट अनरियलिस्टिक है. 5 days ऑन साइट, देन गोइंग फॉरवर्ड दे वोंट बी एबल टू पे मी, ऑलवेज दे आर हैविंग द लेस बजट. ठीक है, बहुत सारे जो कंपनीज है गोइंग फॉरवर्ड, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार्टअप है मैं जो आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ.
बहुत सारे लोग घोस्टिंग भी कर रहे हैं, ठीक है. एंड आफ्टर दैट, सी फॉर वन थिंग, दिस ऑन साइट बेस्ड ऑफ 5 days इशू, दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट बिफोर हैंड. ठीक है, दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट बिफोर हैंड. तो अनदर स्टार्टअप दैट वाज यूएस बेस्ड, शायद रिसेंटली उनका बैंगलोर में ऑफिस ओपन हो रहा है. आई गिव देयर ऑल राउंड्स एंड एट द एंड राउंड दे वर इनिशियली दे सेड दैट द ओवरऑल ऑफर वुड बी रिमोट, बट एट द एंड राउंड दे वर डिस्क्लोजिंग जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है वो रिमोट काम करेंगे, एंड जो नए आने वाले हैं उनको एक को वर्किंग स्पेस बैंगलोर में आके काम करना पड़ेगा. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वट एवर वॉज माई एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ सैलरी, दे ऑल्सो आफ्टर टेकिंग ऑल द राउंड्स दे वर रिजेक्टिंग बेस्ड ऑन दैट. So then I also just asked them that fine, if you want to pay me less, why don't you just give me the remote working? And based on that as well, they tried negotiating it or dragging the overall range to big lower terms. So overall, at the end, after negotiating quite a bit, they just rejected my candidature, and this has been going on mostly in the year of 2024 with the startups candidature. ठीक है. अभी तक मैंने जितने भी startups में काम किया, so I will be just rating that Waxwing AI with whom I worked, that has been the best so far because they are quite a bit transparent. Correct. Their communication and everything, their behaviors, work cultures, everything is far better than any of the startup with whom I have actually worked so far. And these are some of the common problems. और मैंने ये common problems लिखी. लिखने के बाद आपको भी एक बात बताता हूँ कि कोई भी स्टार्टअप अप्रोच करे, ठीक है, अगर आप क्वाइट अ बिट एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर नहीं, एंड प्लीज कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशंस क्वाइट रियलिस्टिकली. ठीक है, पहले पहले पूछ लो. हो रहा है ऐसा, स्टार्टिंग में बोलते कुछ और है, एंड में हो कुछ और जाता है. ठीक है. सो दिस हैज बीन बॉदरिंग मी थ्रू आउट द ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टिल दिस दिसंबर. दिस हैज बीन थॉरली हैपनिंग. आफ्टर दैट एक और बात, इंटरव्यूज हर एक कंपनी के मोर और लेस 3-4 तो होंगे ही. ठीक है ना. सो आफ्टर योर एक्सपेक्टेशंस आर बीइंग मेट, प्लीज प्रोसीड अहेड देन फॉर द इंटरव्यूज. करेक्ट. बिकॉज इट कंज्यूम्स अ लॉट्स ऑफ टाइम. Okay. And after that, dekh lo, if suppose some people, some of the companies are changing their minds, starting from round zero at the end, that we won't be able to play, we won't be able to pay, उसको आप आगे के लिए भी कंसिडर मत करना. गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर अगर वो लोग फिर आपको अप्रोच करते, उसको बिल्कुल कंसिडर मत करना, बिकॉज दीज कंपनीज आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग यू. दिस इज वॉट आई फील. So that's all is from me. And अगर आप Python developer और SDE based on Python based tech stacks इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो, you can just comment out on this video. I will be coming up with a new video corresponding to that. Thanks for watching all of you, and have a nice day. Thanks. Bye.